हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यहाँ सूरज की किरणें हमेशा थोड़ी और चमकदार लगती थीं। शायद इसकी वजह दादी अम्मा थीं। दादी अम्मा अपनी दयालु आंखों और प्यारी मुस्कान के साथ सबकी दादी थीं। उनकी मुलायम सफेद साड़ी और बाल ऐसे जैसे चांदी का बादल। उनकी कोमल आवाज किसी भी रोते बच्चे को चुप करा सकती थी। उन्हें रामपुर का हर शख्स, हर छोटी गली, हर आम का पेड़ और हर शरारती गिलहरी तक याद थी। गांव वाले उन्हें दिल से चाहते थे, क्योंकि उनका दिल गांव के चौक के बरगद के पेड़ जितना बड़ा था, सबको छाया और सुकून देने वाला। दादी अम्मा के दिन छोटे छोटे नेक कामों से भरे रहते थे। वो माओ की मदद करती, बुजुर्गों को समझदारी भरी सलाह देती और बच्चों के लिए हमेशा कोई मीठी चीज रखती। उनका छोटा सा घर, जिसमें साफ सुथरा आंगन था, सबके लिए एक सुरक्षित जगह थी। शाम होते होते बच्चे उनके पास आ जुटते, आंखों में उम्मीद की चमक लिए। दादी अम्मा, कहानी सुनाओ। वे मचल जाते और दादी अम्मा जादुई कहानियां सुनाने लगती, राजाओं रानियों की, बोलने वाले जानवरों की और बहादुर बच्चों की। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, उनमें ईमानदारी, साहस और दया की सीख छुपी होती थी, जो बच्चों के मन में अच्छे बीज बो देती थी। उनका एक खास सपना था, जो उन्होंने दिल में छुपा कर रखा था। दादी अम्मा बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाना चाहती थी। किताबें दुनिया की खिड़कियां हैं, वो अक्सर कहती। हमारे बच्चों के पास बहुत सारी खिड़कियां होनी चाहिए, जिनसे वे झांक सकें। वो एक छोटे से कमरे की कल्पना करती थी, जहां रंग बिरंगी किताबें हों और बच्चे नई दुनिया में खो जाएं, नई बातें सीखें। वो हर पैसे की बचत करती थी, उम्मीद में कि एक दिन उनका ये सपना बच्चों के लिए सच हो जाएगा। ये एक सीधा सादा सपना था, जो उनके पढ़ाई के प्यार और बच्चों के लिए उनके प्यार से जन्मा था। उनकी लोकप्रियता सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बल्कि हर किसी में थी। अगर कोई झगड़ा होता तो लोग उनकी शांत सलाह मांगते। अगर कोई बीमार होता तो दादी अम्मा सबसे पहले पहुंचती, जड़ी बूटी या दुआ लेकर। वो गांव की आत्मा थी, देखभाल करने वाली, सबको जोड़ने वाली और मजबूत। उनकी मौजूदगी दुनिया की अच्छाई की एक प्यारी याद थी। उनके सादे खाने की खुशबू, पुराने भजनों की उनकी धीमी धुन और तुलसी के पौधे की देखभाल, ये सब रामपुर की रोजमर्रा की जिंदगी में रंग भरते थे, उसे और भी खूबसूरत और गर्मजोशी से भरा बनाते थे। पोते की आंखों में चमक थी। दादी अम्मा हंस पड़ी, अरे बिल्कुल लाऊंगी, और शायद एक नई कहानी भी। बच्चे खुशी से खिलखिला उठे। उन्होंने वादा किया कि शाम तक लौट आएंगी, दिल में बच्चों की मासूम मुस्कान और उनके लिए छोटी छोटी खरीदारी की उम्मीद लिए हुए। उनकी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। दादी अम्मा ने एक छोटा सा कपड़े का थैला तैयार किया, उसमें पानी की बोतल और कुछ रोटियां रख लीं। कस्बा कुछ मील दूर था और वहां जाने के लिए शेयरिंग ऑटो रिक्शा ही आम तरीका था। आज उन्हें कुछ ज्यादा ही जोश महसूस हो रहा था, शायद किताबों के ख्याल से या फिर बस सुबह की ताजगी से। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत देखी, जो साड़ी के कोने में बंधी थी। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आज के मिशन के लिए काफी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ पुरानी फटी पुरानी किताबें मिल जाएंगी, जिन्हें वो ठीक करके अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सकें। दादी अम्मा ने अपना छोटा सा घर ताला लगाया और गांव के चौक की तरफ चल पड़ी, जहां ऑटो रिक्शा रुकता था। हवा ताजी थी, मिट्टी और चमेली की खुशबू से भरी। रास्ते में सबको अपनी मुस्कान के साथ राम राम कहती चली। बूढ़े शंभू बाबा गायों को चरा रहे थे और लक्ष्मी कुएं से पानी भर रही थी। हर मुलाकात उन्हें उनके पसंदीदा जुड़ाव भरे जीवन की याद दिलाती थी। वो अपने छोटे छोटे खजाने के साथ लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, खासकर उनके प्यारे बच्चों के लिए, जो उनकी राह देख रहे थे। दादी अम्मा, हमारे लिए जलेबी लाओगी? पोती की छोटी झूम रही थी। शहर जा रही हूँ बेटा, दादी अम्मा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी अम्मा, कहाँ जा रही हो? एक सुनहरी सुबह, सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया। दादी अम्मा हमेशा की तरह जल्दी उठी। उन्होंने अपने तुलसी के पौधे को पानी दिया और चुपचाप प्रार्थना की। पक्षी चहचहा रहे थे और गांव धीरे धीरे जाग रहा था। आज हाट का दिन था। दादी अम्मा को पास के कस्बे जाना था, रसोई के लिए सामान खरीदने। साथ ही वो रंग बिरंगे चार्ट पेपर और कहानी की किताबें भी लेना चाहती थीं। अपने सपनों की लाइब्रेरी के लिए एक छोटा सा कदम। वो मन ही मन गुनगुना रही थीं, सोच रही थीं कि बच्चों के चेहरे पर नए किताबों की खुशी कैसी दिखेगी। कस्बे की यात्रा एक पुराने खड़खड़ाते ऑटो रिक्शा में शुरू हुई, जिसमें गांव वाले और उनका सामान भरा था। दादी अम्मा ने खिड़की के पास एक आरामदायक जगह पाली। गाड़ी धूल भरी कच्ची सड़क पर धड़धड़ाती हुई चल रही थी।
थी और उसके पीछे महीन भूरी मिट्टी के बादल उड़ रहे थे। दादी अम्मा खिड़की से बाहर देखती रहीं, सरसों के पीले खेत लहराते हुए, किसान धूप में मेहनत करते हुए और झोपड़ियों के पास खेलते बच्चे जिनकी हंसी हवा में तैर रही थी। उन्हें ये सब बहुत पसंद था। ये उनकी जिंदगी की धुन थी, एक ऐसी धुन जो हमेशा सुकून देती थी। ऑटो रिक्शा का ड्राइवर सुरेश, जो आमतौर पर बहुत बोलता था और तेज फिल्मी गाने बजाता था, आज कुछ शांत था, शायद अपनी बुजुर्ग सवारी के ख्याल में। दादी अम्मा ने अपने सहयात्रियों से हल्की फुल्की बातें की। मिसेज शर्मा अपनी बहन के यहाँ जा रही थी और मिस्टर गुप्ता, जो दुकानदार थे, नया सामान लेने। सबने मौसम, फसल और आने वाले गांव के मेले की बातें की। दादी अम्मा ज्यादा सुन रही थीं, कम बोल रही थीं, मन ही मन सोच रही थीं कि शाम को बच्चों को कौन सी कहानी सुनाएंगी। जैसे ही ऑटो रिक्शा कस्बे की सीमा के पास पहुंचा, सड़क थोड़ी बेहतर हो गई, लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया। साइकिलें, बैलगाड़ियां और कुछ मोटरसाइकिलें तेजी से निकल रही थीं। दादी अम्मा ने अपना छोटा थैला कसकर पकड़ लिया। उन्हें शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए उनका मिशन उन्हें हिम्मत देता था। वो मन ही मन किताबों की रंगीन तस्वीरें सोच रही थीं और बच्चों की आंखों की चमक जब वो पन्ने पलटेंगे। यही ख्याल उनके चेहरे पर मुस्कान ले आया, भले ही ऑटो रिक्शा भीड़ भाड़ वाली सड़कों से जूझ रहा था। ये सफर अपने आप में एक छोटा सा रोमांच था, उनकी शांत गांव की दिनचर्या से थोड़ा अलग। उन्होंने एक दुकानदार को रंगीन चूड़ियां बेचते देखा, जिनकी खनक बहुत प्यारी थी। एक और था जो फूलों की माला बेच रहा था। ये सब गांव की शांति से बहुत अलग, पर बहुत रंगीन था। दादी अम्मा सब कुछ जिज्ञासा से देख रही थी। वो बाजार में एक कोना ढूंढने की सोच रही थी, जहां से किताबें चुन सकें। उन्हें क्या पता था कि आज का ये सफर उनके लिए एक ऐसी अनोखी और जिंदगी बदल देने वाली मुलाकात लेकर आया है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले कि दादी अम्मा इस अजीब नजारे को पूरी तरह देख पाती, ट्रैक्टर अचानक मुड़ गया। शायद मुर्गी भीड़ से डर गई थी, या शायद अभी ट्रैक्टर चलाना सही से सीख नहीं पाई थी। एक भयानक धातु की चरमराहट, लोगों की घबराई हुई चीख और फिर एक तेज, भयानक टक्कर की आवाज आई। दुनिया घूमती सी लगी, बाजार के रंग धुंधले हो गए, सब कुछ एक अजीब सी धुंध में बदल गया। दादी अम्मा, जो उस बेकाबू मशीन की राह में थीं, उन्हें तेज दर्द का एहसास हुआ और फिर सब कुछ अंधेरा और शांत हो गया। रामपुर का सबसे दयालु दिल अब धड़कना बंद कर चुका था। हटो रास्ते से। आखिरकार ऑटो रिक्शा कस्बे के भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गया। दादी अम्मा धीरे धीरे उतरी, सुरेश को पैसे दिए और उसे सुरक्षित सफर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी साड़ी ठीक की और गहरी सांस ली, भीड़ में संभल कर चलने के लिए तैयार। उनके पास एक लिस्ट थी, दाल, चीनी, मसाले और सबसे जरूरी किताबें और चार्ट पेपर। वो धीरे धीरे चल रही थीं, दुकानों को देखती हुई। बाजार में शोर था, दुकानदारों की आवाजें, ग्राहकों की मोलभाव और दूर मंदिर की घंटियां। ये उनके शांत रामपुर से बिल्कुल अलग था, फिर भी वो अपनी ही लय में चल रही थी। उन्होंने ताजी सब्जियां खरीद ली थीं और अब एक छोटी सी किताबों की दुकान ढूंढ रही थीं। तभी उन्हें एक अजीब, तेज गूंजती आवाज सुनाई दी। ये न तो बस थी, न ट्रक। ये आवाज कुछ अलग थी, गहरी और बीच बीच में अजीब सी बुक बुक के साथ। आसपास के लोग भी चौंक गए, थोड़ा घबरा गए। दादी अम्मा भी रुक गईं, उनका हाथ दिल पर चला गया। ये आवाज अनजानी थी, बेचैन कर देने वाली। उन्होंने उस गली की तरफ देखा जहां से ये आवाज आ रही थी, माथे पर हल्की चिंता की लकीर। फिर वो दिखा, गली के मोड़ से तेजी से आता हुआ एक बड़ा लाल ट्रैक्टर। वो अजीब तरीके से हिलता डुलता भीड़ में बहुत तेज चल रहा था। लेकिन सबको हैरान कर देने वाली बात सिर्फ ट्रैक्टर नहीं थी, बल्कि उसका ड्राइवर की सीट पर गर्व से थोड़ा लड़खड़ाते हुए एक विशाल मुर्गी बैठी थी। ऐसी मुर्गी जैसी किसी ने कभी नहीं देखी थी, लगभग छोटे बच्चे जितनी ऊंची, चमकती आंखें और धूप में चमकते पंख। उसके पंजे स्टीयरिंग पर थे और वो जोरदार बुक बुक करती, जैसे कह रही हो, हटो रास्ते से। The children would often gather near it, hoping to catch a glimpse of her, to hear her call out to them. They missed her terribly. Their games felt hollow, their laughter subdued. The village of Rampur, once vibrant with her presence, now carried a heavy heart. They had lost their storyteller, their confidant, their Dadi Amma. And a question hung in the air. What about the hen that caused this tragedy? Dadi Amma's small hut stood silent, a poignant reminder of her absence. The days that followed, they were just filled with a quiet sadness. The village felt empty, a vital spark extinguished. Even the banyan tree in the square seemed to droop its leaves in sorrow. The elders of the village gathered, their faces grim.
They spoke in low tones about the strange circumstances. A tractor, a giant hen. It sounded like a fantastical tale, but the reality of Dadi Amma's passing was stark and undeniable. Anger mingled with sorrow. How could such a thing happen? Who was responsible for this bizarre and fatal accident? The entire village mourned not just a person, but the loss of a guiding light, a source of unwavering love and wisdom. The aroma of her cooking would no longer drift from her hut. Her songs would no longer grace the morning air. Who would mend our broken toys with such patience? Who would tell us stories now? A heavy blanket of grief descended upon Rampur. Dadi Amma, their beloved grandmother, was no more. It was a truth too harsh to comprehend, too painful to accept. The children were simply inconsolable. Little Meena and Raju, who had eagerly awaited her return with jalebis and stories, refused to believe it. Their Dadi Amma, who always had a smile and a comforting hug, couldn't just disappear. They remembered her gentle hands, her soothing voice, and the magical worlds she created with her words. And the cheerful banter of women at the well, it turned into hushed, sorrowful whispers. The laughter of children playing in the village square, just died down. The news of Dadi Amma's tragic accident, reached Rampur like a cold, cruel wind. It spread from house to house, leaving behind a trail of disbelief and heartbreak. Suresh, the auto rickshaw driver, had been one of the first to reach the scene and had brought back the devastating tidings. Now Henrietta was caged, misunderstood, and probably very frightened. The intelligent hen who dreamt of fitting in and being helpful was now seen as a dangerous anomaly, the cause of immense grief. The old inventor had recently passed away, leaving me alone. I was clever enough to understand that I needed to find a new purpose, a new way to contribute. I had seen tractors working in the fields, and with my enhanced intelligence, figured out the basics of operating one. My intention was never malicious. I drove the tractor to town hoping to find work, maybe help farmers, or even trade some of the farm's produce. I just wanted to be useful, to be part of a community, just like my old master had taught me. But I understood machines, not the complexities of crowded human marketplaces. The accident with Dadi Amma was a terrible, tragic mistake. I was confused and scared by the chaos of the market. I tried to slow down, to steer away, but my control over the heavy machine was still very basic. I hadn't meant to harm anyone. In fact, my core programming, instilled by the kind inventor, was to help and protect. The truth, as it slowly began to emerge, was less fantastical but equally astonishing. Henrietta had been raised on a small, isolated farm by a kind but eccentric old inventor. This inventor had been trying to create devices to help animals communicate and improve their cognitive abilities. Henrietta was his most successful and beloved subject. She had learned by observing, listening, and through the inventor's patient teachings. Henrietta's past was a complete mystery. Some folks whispered she had escaped from a secret government laboratory conducting animal intelligence experiments. Others believed she was a divine messenger, gone astray. The story of the tractor-driving hen spread like wildfire, not just in Rampur, but in all the neighboring villages. Some called it a monster, and others, well, they whispered that it was a bewitched creature. Even the police from the nearby town were totally puzzled. They had managed to capture the enormous hen, who they had named Henrietta, and secured the tractor. Henrietta was unlike any hen they had ever encountered. She was unusually large, with feathers of a peculiar sheen, and her eyes held a spark of uncanny intelligence. She didn't cluck like an ordinary hen. Her sounds were more complex, almost like attempts at communication. Their innocent plea, born from the very lessons Dadi Amma had instilled in them, began to soften the hearts of the villagers. They remembered Dadi Amma's stories where even mischievous animals learned their lessons and became heroes. Could this giant, intelligent hen also have a different story to tell? The children's faith in Dadi Amma's wisdom and their willingness to extend compassion even in their grief was a powerful testament to her legacy. The focus of the panchayat slowly began to shift from mere retribution to a more thoughtful consideration of the future. Dadi Amma also said everyone deserves a second chance. If the hen is very smart, maybe she can learn to be good, to help us, like Dadi Amma wanted to help us with her library. Tell us more, children. What do you think we should do? The children's words, simple yet profound, struck a chord.
They reminded everyone of Dadi Amma's own teachings. She was a woman of immense compassion who believed in understanding before judgment. The Sarpanch looked at the children, a flicker of admiration in his eyes. Maybe the hen didn't mean to do it. Dadi Amma said accidents happen. A hush fell over the panchayat. All eyes turned to the two small children standing there, their faces earnest. Sarpanch ji, Dadi Amma always taught us to forgive. She said even animals have feelings. Cried a woman, tears streaming down her face. The sentiment was understandable. Their loss was profound, and the circumstances were baffling and infuriating. They needed someone, or something, to blame for their pain. Just as the discussion grew more heated, a small voice piped up from the back of the hall. It took our Dadi Amma from us. Exclaimed one man. That creature must be punished. The Rampur village panchayat convened a week after Dadi Amma's passing. The atmosphere in the hall, usually a place of lively discussion, was heavy with sorrow and a simmering anger. The Sarpanch, a wise old man named Hari Shankar, listened patiently as villagers voiced their grief and demanded justice. She would stand at the junction, her large frame easily visible, and use a series of squawks and wing gestures to guide traffic. Children found it immensely amusing to take traffic lessons from a giant hen. She became a village mascot, a quirky symbol of turning a tragedy into an opportunity for positive change. The villagers even built her a comfortable, large coop near the panchayat hall. Henrietta, the super-intelligent hen, had finally found her community and her purpose, all thanks to the understanding hearts of Rampur's people, guided by Dadi Amma's unseen spirit. Henrietta is helping us, just like Dadi Amma always hoped for. Look, she's really learning fast. Dadi Amma would be so proud. I will do my best to keep everyone safe, I promise. It was a humorous yet practical solution. Henrietta took to her new role with surprising diligence. Instead of punishing Henrietta, we have decided to give her a chance to contribute to the village, just as she had wanted. Given her experience with the tractor and her quick learning ability, we have a unique idea. With some training and a specially designed set of signals, Henrietta will be appointed Rampur's first village traffic safety officer hen. Her job will be to help manage the bullock carts and occasional vehicles at the village crossroads, ensuring children cross safely, and to gently remind drivers to be careful. The Sarpanch, Hari Shankar, pondered deeply over the children's words and the villagers' sentiments. He too had loved Dadi Amma and felt her loss keenly, but he was also a man of reason and fairness. He arranged for Henrietta the hen to be brought to the village under careful supervision. When Henrietta arrived, she looked less like a monster and more like a very large, very bewildered bird. She was surprisingly calm, her intelligent eyes observing everyone. The children, though initially hesitant, approached her slowly, offering her some grains, just as Dadi Amma might have done. The panchayat, with help from a kind veterinarian from the town who had heard of Henrietta's unique case, began to understand her better. They learned about her background with the inventor and her desire to be helpful. They saw her intelligence firsthand as she quickly learned simple commands and even seemed to understand their gestures. It became clear that the accident was indeed a tragic misstep, not an act of malice. The villagers, seeing Henrietta's gentle nature and her responsiveness, started to view her differently. The anger began to be replaced by a curious sympathy. Henrietta, the traffic safety hen, also became an integral part of Dadi Amma's living legacy. She didn't just manage traffic, she also became a gentle protector of the children. She would often be seen near the library or the school, ensuring the little ones were safe. The children adored her. They would share their snacks with her and even try to teach her new words. Henrietta, in turn, seemed to understand them, responding with soft clucks and intelligent gazes. She was a daily, feathered reminder of how understanding and compassion could create the most unexpected friendships and solutions. And so, Rampur continued to flourish, carrying Dadi Amma's light within it. Her stories lived on in the laughter of children, in the rustling pages of library books, and in the kind acts that villagers showed one another. The tale of Dadi Amma and the tractor-driving hen became a legendary story in itself, told and retold, teaching future generations about love, loss, forgiveness, and the surprising ways life can teach its most important lessons. Dadi Amma's dream had not only come true, but had blossomed into something even more beautiful.
ensuring her memory would forever be a blessing to Rampur. And Henrietta is always there to make sure we get home safe. Daddy Amma would be so happy to see us all together here. I may not be able to read, but I love being near the library and watching the children laugh and learn. Though Dadi Amma was no longer physically present, her spirit and her dreams continued to thrive in Rampur. The greatest tribute to her memory was the creation of the Dadi Amma Memorial Library. The villagers, inspired by her lifelong wish and spurred by the children's earnestness, pooled their resources. Some donated books, others offered their skills to build shelves and paint the room. Even Henrietta, in her own way, helped by carrying small loads of materials on a little cart attached to her, much to the delight of the children. The library was inaugurated on Dadi Amma's birthday. The library became the new heart of the village for the children. It was filled with colorful books, just as Dadi Amma had envisioned. Her collection of handwritten stories, lovingly preserved, took pride of place. Children